The art of handicraft in Sindh dates back to Indus Civilization. Almost all of the handmade artwork is done by women and has a market in the large cities and with tourists. Village women of Kamaal Deen Pavar are enormously skilled and flawless at their craft of making Peesh Ropes, which are widely locally used to make cots and stools. मेरा नाम बशीरा है और मैं गोट कमाल दीन पवार में रहती हूँ। जो पीश है, पहले हम जोही से ख़रीद कर आते हैं। मण के 1800 होते हैं और वहाँ से लेकर आते हैं, फिर भिजाते हैं, पुसाते हैं फिर उसे निकाल कर चीट लेते हैं, एक एक दाना करके अलग करते हैं और उसे भिजा कर पुसा कर और फिर वट लेते हैं, फिर पचा लेते हैं। इस तरह से तैयार हो जाता है हमारा बाण। Floods of 2022 completely submerged the village Kamaal Deen, drowned livestock and destroyed property, putting a complete stop to the rope-making business. Later, during the Strengthening Early Recovery project by LHDP and Oxfam, the teams recognized and seized the opportunity to once again bring the talented women back to their feet and give a push to rope-making business. Several women got registered for grants and again initiated the small-scale cottage industry. Today, ladies are making as much as 4,000 rupees profit a day. पहले तो उधार में लेकर आते थे, फिर अभी हमें मिला है जो फ़ायदा लाड़ वालों ने दिया है, उसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। 4,000 बच जाते हैं, मूल भी निकल गया हमारा।